नमस्ते। I Jv'n Neha Sharma, ज्योति विद्यापीठ ललित यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन in Nepal. So our today's topic is register transfer language. In previous lecture, we have discussed about what are the registers, right? So in this topic, we are discussing register transfer language. So a digital computer system exhibits an interconnection of digital modules such as registers, decoders, arithmetic elements, and control logic. So these digital modules are interconnected with some common data and control paths to form a complete digital system. Moreover, digital modules are data defined by the registers and the operators that are performed on the data stored in them. So registers का काम क्या होता है? टेम्परेरी डेटा स्टोर करना, ठीक है, जब तक कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता हमारा, है ना. एंड द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्टोर इन रजिस्टर्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशंस. तो जब तक हमारा डेटा स्टोर है रजिस्टर के पास में, और ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन जो बेसिकली हमारे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं रजिस्टर में डेटा पे, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं. So the internal hardware organization of digital system is best defined by specifying the set of registers and the flow of data between them. Okay, so the sequence of micro operations performed on the data which are stored in the register. तो अब जो इंटरनल हार्डवेयर है वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं एंड द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन दैम. देन वहाँ पे क्या हो रहा है? माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं डेटा पे विच आर स्टोर्ड इन रजिस्टर्स एंड द कंट्रोल पार्ट दैट इनिशिएट द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन. So register transfer language is the symbolic representation of notation used to specify the sequence of micro operations. तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज जो है उसके थ्रू हम बेसिकली इन माइक्रो ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में. So in a computer system, data transfer takes place between processor registers and the memory and between processor registers and input-output system. So these data transfers can be represented by the standard notation given below, like the notations R0, R1, R2. These are the registers 10, 12, and so on. Represent process registers. The address of memory location are represented by such alloc, place, mem, etc. Then input-output registers are replaced by names such as data in, data out, and so on. The content of registers or memory location is denoted by placing square brackets around the name of register or memory location. जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास में फ्रीडम होती है कि हम वेरिएबल को कोई भी नेम दे सकते हैं, फंक्शन को कोई भी नेम दे सकते हैं, पर जनरली हम तब भी फंक्शन को वही नेम देते हैं जो हम उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. जैसे कि अगर मैं एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ फंक्शन में, तो मैं फंक्शन को क्या नेम दूंगी? एडिशन या ऐड दूंगी, है ना, ताकि मुझे भी पता रहे कि मैंने उस फंक्शन में क्या इम्प्लीमेंट किया, उस प्रोग्राम में क्या इम्प्लीमेंट किया. अगर हम क्लास का नाम देते हैं जैसे एडिशन परफॉर्म करना है तो भी हम जनरली वही देते हैं, लाइक क्लास ऐड, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, राइट. अगर बहुत ज़्यादा आपने एक प्रोग्राम में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रखे हैं. तो लाइकवाइज अगर हम रजिस्टर्स की बात करें, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो उसके लिए भी लैंग्वेज हम यहाँ पे देखते हैं जो है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज. तो जितने भी ऑपरेशंस, माइक्रो ऑपरेशंस हमारे रजिस्टर्स पे परफॉर्म हो रहे हैं उनको हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं. तो जैसे ऐड परफॉर्म हो रहा है तो हम ऐड लिखेंगे, ठीक है. डेटा अगर इनपुट हो रहा है तो डेटा इन डालेंगे, डेटा आउट हो रहा है अगर तो डेटा आउट लिखेंगे. तो इस तरीके से ये इसके प्री डिफाइंड कुछ symbolic representation then, right? So register transfer. The term register transfer refers the availability of a hardware logic circuit that can perform a micro operation and the transfer the result of operation to the same or another register. So most of the standard notations used for specifying operations on various registers are stated below. So here are different symbolic notations, like for memory address register is denoted by memory address register MAR. Program counter को PC से डिनोट करते हैं which hold the next instruction address. Instruction register को IR से होल्ड करते हैं that instruction being executed. Then R1 जो है हमारा process register है. We can also dictate individual bits by placing them in parentheses, like 8 to 5, R to 5. Okay. Then data transfer from one register to another register is represented in symbolic form by means of replacement operator. For instance,
ट्रांसफर ऑफ डेटा ऑफ रजिस्टर R1 into R2। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा माइक्रो प्रोसेसर्स में, तो उसमें भी हम ऐसे ही डिनोट करते हैं R1 R2। टिपिकली मोस्ट ऑफ द यूजर वांट द ट्रांसफर टू अकर ओनली इन टू डिटरमाइन कंट्रोल कंडीशंस। दिस कैन बी शोन बाय फॉलोइंग इफ देन स्टेटमेंट। तो P इक्वल टू इफ P इक्वल टू 1 देन, तो क्या होगा ये R1 R2, मतलब P is a control signal generated in the control section. So it is more convenient to specify a control function by separating the control variable from the register transfer operation. For instance, the following statement defines the data transfer operation under a specific control function. So here you can see the R1, R2, the load and the control circuit, which is P, right? So image shows the block diagram that depicts the transfer of data from R1 to R2. Okay, so here letter N indicates the number of bits for register, and an output of register R1 are connected to an input of output. So a load input is activated by the control variable P, which is transferred to the register R2. Okay, so this is all about the register transfer language and how why this register transfer used, what is the significance of register transfer language, and what are the micro operations. So that's all for this lecture. Thank you so much.